Good morning, students. We already start chapter number 4, carbon and its compound, and in previous video we will discuss about covalent bond and electron dot structure of hydrogen molecule, nitrogen molecule, fluorine molecule, oxygen molecule, chlorine molecule, methane molecule, ammonia molecule, and water molecule, which we already discussed in our previous video. And we also discussed what type of bond in hydrogen atom in hydrogen molecule, that is single bond. Similarly in chlorine, in case of fluorine, and in case of oxygen there is a double bond present between two oxygen atom, and in case of nitrogen there is a triple bond. And what is a covalent bond? The bond formed by sharing of an electron pair between two atoms. The bond formed by sharing of electron between the atoms, that is called covalent bond. And covalently bonded compounds have low melting and boiling point, poor conductor of electricity, and they have no charged particle. That's why they are poor conductor of electricity and mostly exist in a solid, liquid or gas state. Next topic is allotropes of carbon. So what first we state that allotropy, the different forms of an element के अलग-अलग जड़ियां एक element दियां forms ने, that is called allotropes of that element. So allotropy of carbon or allotropes of carbon means different, और पंजाबी च जिन्हों कह दिंदे भिन्न रूप, different forms, different types of that element, and that is called allotropy. So we will discuss in this chapter allotropes of carbon, because we discuss carbon and its compound. So the element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. So ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ, ਬਟ ਦੇ ਹੈਵ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼. ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਸੇਮ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, but there is only difference in their physical properties. Physically different है means ਉਹਨਾਂ ਦਾ melting boiling point, ਉਹਨਾਂ ਦੀ conductivity, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ bonding. Physical properties are different but chemical properties are same. That is called allotropy or allotropic form of any element. So there are three allotropic forms of carbon. Mainly we discuss here two, diamond and graphite are formed by carbon atoms. So mainly two allotropic forms of carbon, that is diamond and graphite, and third one is fluorines. Third one is fluorines here. So which we discuss one by one. So both diamond and graphite are formed by carbon atom. जो pencil ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, that is made up of graphite, and diamond, that is a ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਮੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ. ਸੋ ਬੋਥ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਕਾਰਬਨ. ਡਾਇਮੰਡ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਫਟ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ formed from carbon. Both are formed from carbon. So by carbon atom, the difference lie in the manner in which carbon atoms are bonded to one another. So what is the main difference between diamond and graphite? Because they are both formed from carbon. So main difference in the bonding of carbon atoms. So in diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms. So each carbon atom in case of diamond is bonded to other 4 carbon atoms, forming a rigid 3-dimensional structure. In this you see here, it's a first carbon and bonded to 1, 2, 3 and 4 carbon. Each carbon is bonded to other 4 carbon atoms in 3-dimensional. 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ bonded ਨੇ, means any strong bonding है. ਇਹ carbon देखो 1, 2, 3, 4. Each carbon, एक carbon ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ carbons bonded ਨੇ? 4 carbon atoms bonded ਨੇ, which form a 3D structure. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ diamond ਦੀ structure ਹੈ. ਕਿਹਦੀ? Diamond ਦੀ structure. But in case of graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਐਟਮ ਹੈ 1, 2, 3. ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡਡ ਹੈ 3 ਕਾਰਬਨ ਐਟਮਸ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਕਸਾਗਨ ਹੈ.
मैथ दे विच तुसीं शेप्स पढ़ियां हैक्सागनल एरिया। जिहड़ी चौथा बॉन्ड है वो टैंपरेरी साडे को दो हैक्सागन दे विच उपर लेयर ते थल्ले वाली लेयर दे विच फॉर्म होया, जबकि डायमंड दे विच एक कार्बन 4 कार्बनस नाल बॉन्डेड है, जबकि ग्रेफाइट च 1 कार्बन एटम बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स इन सेम प्लेन गिव अ हैक्सागनल एरे। मतलब कि हैक्सागनली एक लेयर ते दूसरी लेयर दे विच चौथा बॉन्ड बन जरूर है, बट दैट बॉन्ड इज वीक। सो वन ऑफ दीज बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड। सो किते ना किते एक कार्बन दे विच किहड़ा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। एक लेयर दे उपर दूसरी लेयर है साडे को जिहड़ी डॉटेडली ज्वाइन कीती हुई है, बट एक कार्बन जिहड़ी हैगी वो किन्नियां कार्बनस नूं बॉन्डेड है, 3 कार्बनस नूं। हाउ मैनी कार्बनस? 3 कार्बन एटम्स इन विच ज्योमेट्री? hexagon and the valency, so एक दे विच डबल बॉन्ड है, so the valency of carbon is satisfied। so कार्बन कार्बन दी वैलेंसी बैलेंस्ड है, बट एक कार्बन दे नाल किन्नियां कार्बनस अटैच ने? 3, जबकि डायमंड दे विच एक कार्बन दे नाल किन्नियां कार्बनस बॉन्डेड ने? 4। so graphite structure is formed by hexagonal array being placed in the layers one of the above the other। एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। क्लियर? So these two different structures result in diamond and graphite having different physical properties, even though their chemical properties are same। In the starting I will tell you कि साडे को जिहड़ी different structures होने करके diamond ते graphite दी properties, physical properties different हो जांदियां, but their chemical properties are same। So what point we consider diamond as a hardest substance? Why? Because each carbon atom is bonded to other 4 carbon atoms in 3 dimension, जिहदे करके strong bonding होगी साडे को। That's why it is a hardest substance in nature, while graphite is smooth and slippery, or you can say soft in nature। So ये साडे को difference दा first point हो गया, diamond is a hardest substance, graphite is smooth and slippery substance। Second point, graphite is also a very good conductor of electricity, but unlike other non-metals, diamond is a bad conductor of electricity। ਜਿਹੜਾ ग्रेफाइट आ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬੌਂਡ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? 4, ਬਟ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 3। ਸੋ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ, ਬਟ ਡਾਇਮੰਡ ਇਜ਼ ਅ ਪੂਅਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ਡ? Diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature। Diamond असी किमें form कर सकते हैं? synthetic pure carbon नू असी high pressure ते temperature ते pressurized करके। So the synthetic diamonds are small but otherwise indistinguishable from natural diamonds। So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ synthetic diamonds ਨੇ छोटे छोटे होंदे ने, but असी उन्हां दे विच distinction नहीं कर सकते natural diamond ते ਜਿਹੜੇ synthetic diamonds ने। ਤੇ थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म साडे को हैगी है फ्लोरीन्स फ्रॉम दी अनदर क्लास कार्बन एलोट्रोप्स। दी फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड C60 जिहदे च 60 कार्बन साडे कोले अरेंज हुई हुई ने एक फुटबॉल दी शेप, इस शेप जिहदे च हैक्सागनल ते पेंटागनल दोनों शेप्स ने। सो सेंस दे दिस लुक्ड लाइक अ जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय US आर्कीटैक्ट बकमिनिस्टर फुलर, जिहदे नाम ते फ्लोरीन्स पिया, की पिया? फ्लोरीन्स। सो दी मॉलिक्यूल नेम्ड एज फ्लोरीन। सो ये थर्ड फॉर्म है साडे को, एक तरह की रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? सो देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेनली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट? सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज हार्डेस्ट इन नेचर, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर एंड ब्लैक इन नेचर, स्मूथ इन नेचर। Second point, there are strong covalent bond between carbon atoms because each carbon atom bonded to other 4 carbon atom। There are weak van der Waals force of attraction in graphite। So weak force of attraction ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ graphite ਦੇ ਵਿੱਚ, but in case of carbon, each carbon atom is bonded to other 4 carbon atoms in 3 dimension, but each carbon atom is bonded to other 3 carbon atoms in hexagonal array। डायमंड दे विच 4 कार्बन एटम्स बॉन्डेड ने एक कार्बन नू, जबकि ग्रेफाइट दे विच 3 कार्बन एटम अटैच ने एक कार्बन एटम नू। एंड इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द डिफरेंस पॉइंट बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। आई रिपीट, व्हाट इज एलोट्रॉपी? The different forms of an element whose physical properties are different but chemical properties are same। So there are mainly
two types allotropic forms of carbon, diamond and graphite. Third one is fluorines. Mainly two types, diamond and graphite. And in case of diamond, there is a closed packing structure, but in case of graphite it is soft in nature and only each carbon atom bonded to 3 carbon atoms in hexagonal array, जबकि एक double bond present है. There are weak force of attraction present in diamond, but there are graphite, but there are strong force of attraction in case of diamond. Clear? It is a good conductor of electricity in case of graphite. Diamond is a poor conductor of electricity. Clear? If you guys have any doubt in this topic, you can call me or through message you clarify your doubt. Thank you.